In today's video, I will be giving you simple ways to clear your speech or to make your speech more clear, to sound with more confidence and more clarity. Trust me, you have to watch this video from beginning till end. You cannot neglect, you cannot avoid to miss this video if you want to ace, if you want to speak English fluently and correctly. Okay. These are simple and very basic. It is not something that I'm giving you advanced courses. Okay, you do not have to join very expensive courses in which you have to give chunks of money, just to be able to speak clearly, good English, gain good communication skills. This is very simple, and there are 6 to 7 points. Let's begin. The first is tongue twisters. Just before this video, I have uploaded a detailed video on tongue twisters. But for this video, I would say, if you really want to have clarity in your words, if you really want to have, if you really want sentences, if you want your sentences to flow, to come out of your mouth, just like a butter melts on a pan, on the surface of a pan, you have to practice tongue twisters because they improve your voice, they kind of brings clarity to your speech. Then they also help you in identifying the errors that we often tend to make between sh and s, r and l, f, t, th. Okay. The tongue twisters बहुत important होते हैं. Like any other muscle, tongue is also a muscle which needs to be strengthened, which needs to be practiced, which needs to be, I would say, trained. Okay. TSR, ये मैंने बताया है, ये 3 मंत्र है. TSR, T stands for training, S stands for stretching, and R stands for repetition. You have to repeat your tongue twisters again and again. If you are pro in speaking tongue twisters, like there's so many tongue twisters. She said, she shall on the seashore, Betty bought a bitter butter, but the butter was bitter, so she bought another bitter butter to make the bitter butter better. So what are these tongue twisters? अगर आप नए हैं तो इनिशियली आप धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ ये गड़बड़ हो रही है, यहाँ ये गड़बड़ हो रही है, ठीक है, आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, एंड देन यू हैव टू वर्क अपॉन योरसेल्फ. Practice is the key to success. You have to consistency, I would say. Along with practice, consistency. You do not have a choice, to break the routine that you have been following of saying tongue twisters. Okay. Moving on to number 2, mirror speaking. If you are following my channel, if you are following my video, I have been telling you that mirror speaking, trust me, it does wonders to the people who are, who were not confident earlier, who were hesitant, in expressing themselves. But with the help of this mirror speaking, those people today, in today's time, they are wonderful public speakers, they are wonderful people. Mirror speaking, this activity is performed by news anchors, by public figures, by, brilliant and talented people. Okay? I can give you examples of such people. Just for the sake of saying, I'm not saying these things. Actually, we have live examples of people who have, worked upon themselves, who have the issue of stammering, stuttering, but with the help of tongue twisters, mirror speaking, with the help of these exercises, they have transformed themselves from such to a great new personality. For example, Hrithik Roshan, okay, he's a Bollywood actor. He had this problem of stammering. Then Joe Biden, who was once USA president, अभी नहीं है वो, पहले थे, he also had this issue, but with the help of these exercises, modulation लेके आए, उन्होंने अपना जो डर था, जो fear था, वो achieve किया, उस पे work करके. So mirror speaking, I myself also I've told you a number of times that when I was a kid, I had nobody to talk to in English. So what I used to do was I used to do mirror talking, mirror speaking. ठीक है? सामने आपको खड़े हो जाना है शीशे के सामने, जो भी आपका schedule है दिन भर का, you have to take out 5 to 10 minutes. You have to talk to yourself and by standing in front of mirror. You have to see how your tongue moves, how your expressions, how words come out of your mouth. Okay? और अगर गड़बड़ हो रही है, शुरुआत में दिक्कत हो रही है, तो प्रैक्टिस करेंगे ना, है ना?
comes record and replay. I came across certain people who commented down in this comment section of my certain videos that ma'am, we have been doing this, but we are unable to see any progress in our speaking English. We have been following these tongue twisters and mirror speaking, but एनालाइज करने पे ये पता चल रहा है कि वहीं पे क्यों आप वहीं पे हैं, बिकॉज आप रिकॉर्ड और रिप्ले नहीं कर रहे हैं. You have been working, no doubt, but who's going to tell you that this is your fallback या this is your fallout? यहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हैं. आप रिकॉर्ड करिए, चाहे आप ऑडियो बनाइए, चाहे आप वीडियो बनाइए, even if you're mirror talking, even if you're speaking your tongue twisters, उसको रिप्ले करके देखिए कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं. And you have to make it a point that those mistakes that you are been doing are not repeated again. Then what is the point of doing all this if you are not marking your mistakes, if you're not taking a note of your mistakes that you have been committing up till now. ठीक है, जो आप गलतियां करते आ रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड बनाइए कि अच्छा ये गड़बड़ हो रही है मुझसे, या मुझे ये रूल्स नहीं समझ में आ रहे हैं, I have to work upon this, और फिर नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं करनी है. ओके. Shadow native speakers. Trust me, this does wonders with the people who have in them, who know the words, who can speak good English, but it is the fear of speaking English that is stopping them to be, who are unable to express their feelings. कहने का मतलब है, shadow native speakers का मतलब है आपको अंग्रेजी समझ में आती है, आपके पास वर्ड्स भी हैं, you can speak also, but वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो झिझकपन है. तो आपको क्या करना है, शैडो नेटिव स्पीकर्स मतलब any channel, anything on the internet, anything on the YouTube that is of your interest, you have to watch native speakers of that particular field. कहने का मतलब है, जैसे for example, if I take my example, I am very much into the entertainment industry, I am very much into the news. So what do I do is I watch certain channels on YouTube, I watch certain news channels. तो जो एंकर्स जैसे बोलते हैं, है ना, I try to shadow it. मैं भी वैसे ही बात करने की कोशिश करती हूँ. इससे क्या होता है, there is a change in my voice modulation. मेरी आवाज़ में चेंज आता है. जिस तरह से शब्द वो लोग बोलते हैं, है ना. अब जैसे कोई भी एग्जाम्पल है, अगर मैं वर्ड एक आपको दूँ, एक्चुअली, तो अगर आप इसे पढ़ें, दिस इज एक्चुअली, बट when you hear it, certain people say it actually, some people say it actually. ठीक है, it is just the way that how they pronounce the words. ठीक है. और मुझे क्या होता है, नए वर्ड्स ऑफ कोर्स मिलते हैं, है ना, वोकैबुलरी मेरी एनहांस होती है. पहली चीज, नए शब्द, मुझे शब्दकोश भंडार मेरा बढ़ता है. दूसरी चीज, आई ऑल्सो गेट एन आइडिया ऑफ द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स. ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल होता है. सो स्टार्ट वॉचिंग एनीथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट ऑन यूट्यूब, ऑन टेलीविजन, विच एवर सोर्स यू फील कंफर्टेबल इन. ठीक है, ये प्लीज एक बार करके देखिएगा. अगर आप न्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं, पॉलिटिक्स की न्यूज है, कोई भी न्यूज है, आप उन्हें देखिए एंकर्स को कैसे बोल रहे हैं. एंड यू ऑल्सो यू कैन रिकॉर्ड इट with the help of mobile phones, with the help, if you have smart TVs, you can record it and make a point, pause करके कि जैसे sentences वो बोल रहे हैं आप भी वैसे बोलें. Read aloud loudly, just like we used to do in our schools. Schools में हम बोलते थे ना, stand up and read loudly. तेज बोलने से क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, आप जो लिखा है पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं. The more you listen, the more you read, knowingly or unknowingly, words get locked in your subconscious mind. ठीक है, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सुनेंगे इंग्लिश, है ना, जितना आप पढ़ेंगे उतना, चाहे आप चाहें या आप ना चाहें, वर्ड्स अपने आप खुद ब खुद you will grasp new words. ठीक है, so this is very important. You can also record it while you are reading something.
I'm not saying that start reading newspapers, pick up the Tribune newspaper and start reading. No, you can pick some short stories. जैसे छोटे बच्चे को क्लास सेकेंड में मॉरल स्टोरीज होती हैं वो पढ़ाई जाती हैं, which has a moral story attached to it. ठीक है, आप वो उससे आप शुरुआत कर सकते हैं for the basics beginners के लिए. Okay. Pause and pace. By this I mean you should know when to put a pause, how much you should pause when there's a comma, how much you should pause when there's a full stop, what type of expression you should give when there's a question mark, what type of tone, what type of modulation should be there in your voice when there's an exclamatory mark. है ना? सेंटेंस में अगर कॉमा है तो आपको धीरे बस 2 सेकेंड्स का पॉज देना है. जब फुल स्टॉप है तो पॉज की ड्यूरेशन बढ़ जाती है. ठीक है, जब क्वेश्चन मार्क है तो जैसे हिंदी में भी आप बोलते हैं, जब आप किसी से कुछ सवाल पूछते हैं तो आपकी टोन आपने देखा होगा बदली रहती है ना. जैसे मैं अगर बोलूं तुम कल रात कहाँ थी, है ना, मैंने आराम से नहीं बोला तुम कल रात कहाँ थी, है ना. तो वैसे ही क्वेश्चन टोन आपका वॉइस का आपको ध्यान देना है. एक्सक्लेमेटरी मार्क, अगर कोई certain news of happiness, there is certain news of enlightenment, बहुत अच्छी न्यूज़ है ना, तो उसका एक्सप्रेशन अलग होता है, तब आपका वॉइस टोन अलग होता है. अगर कोई सैड न्यूज़ है ना, तो उसका वॉइस, उसका जो टोन होती है जब आप रीडिंग कर रहे हैं वो अलग होती है. सो यू हैव टू कीप दिस इन योर हेड. ओके. एंड लास्ट ऑफ कोर्स प्रैक्टिस. Practice is the key to success. ठीक है? Train your tongue, train your voice, and be ready to take on the world with fear or fire, with fire and not fear. So these were the simple ways, my dear friends, with which you will be able to learn English, with which you will be able to, speak clear English. You will be able to speak with more confidence. कोई डाउट है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया कि मैम कैसे करें, कैसे होना चाहिए, शुरुआत कैसे करें, क्या पढ़ें, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कौन सा आर्टिकल पढ़ें, ठीक है, मिरर टॉकिंग में क्या बात करें, please do not hesitate to ask me in the comment section. I am 24/7 available. I will definitely reply. I will definitely try to sort out your queries. वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. और हाँ, लाइक तब करिएगा या शेयर तब करिएगा जब आपको लगे कि आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है. आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग, आफ्टर exercising things that I've been telling you to do. Thank you for giving me your crucial time.